What do you think other schools should learn, particularly from this IDPS society? I'm not specific about any school, but the way you have uplifted your kindergarten, you have uplifted the infrastructure. It's to enjoy studies. It should not be stressed like books ka stress, uska stress. No, our students should come to school and they should leave happy kids from. आपको लग रहा है अभी भी करना है या आपने किया है या करने की कोशिश आप कर रहे हैं? देखिए, we already had certain parameters in our kindergarten. I'll be very honest. We are going to adapt now global standards, international standards. So our kids will be able to fulfill that international standard, and with that they'll be able to cope up with any of the student, whether in India or in abroad. It's a kind of fundamental rule in IDPS society that they are going to send trainers not from India but from abroad to just train and mentor our teachers. You mean to say कि जो आपके resource persons या बाकी जो लोग soft skills या life skills को लेकर हैं, तो your teachers would be trained? Yes, our teachers will be trained for the parameters of society. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को एक मरतबा फिर हमारा प्यार भरा सलाम। कहते ना दोस्तों कि परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और है। शाहीन का जहाँ यही होता है कि अगर तालीमी लिहाज से अपने मुआशरे को बढ़ावा दिया जाए, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं IDPS सोसाइटी दिल्ली की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक इनाग्रल श्रीनगर के ज़कूरा एरिया में हुआ, जहां पर IDPS सोसाइटी के जो सरबराह डॉक्टर नारायण हैं, उन्होंने इस स्कूल के हवाले से, जो ज़कूरा में IDPS सोसाइटी का स्कूल है, इसको बढ़ावा देने के लिए और तालीमी लिहाज से हमारे मुआशरे में एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और उस कदम के जो सिपाही हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुबारकबादी की मुस्तहिक, और उनका नाम है मिस शीमा जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आपको मुबारक और पूरे जो कश्मीरी कौम है उनकी तरफ से आपको मुबारक, क्योंकि IDPS सोसाइटी की जानिब से आप प्रिंसिपल बतौर यहाँ पे काम करेंगी ज़कूरा श्रीनगर में। सबसे पहले, हाउ आर द फीलिंग्स? I'm extremely overwhelmed. First of all, thanks to Almighty Allah, because कहते हैं ना, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला ही इज़्ज़त बख्शने वाला है। But yes, with that is your hard work. Since our IDPS was in franchisee mode, and since that time I have worked as academic coordinator and vice principal for 2 years. And because of that hard work today, I am the first principal of society. So you're feeling on cloud? I am feeling on cloud. Right now I'm on 7th sky. Okay, that's great message. तो शीमा जी, अब चूंकि लॉन्चिंग हुई, बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर साहब खुद आए थे यहाँ पे, और ये ख़ासकर स्कूल के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आप कैसे देखती हैं, ख़ासकर IDPS सोसाइटी का एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया भर में, लगभग दर्जनों की तादाद में ममालिक जो हैं, चाहे हम मशरिक़ वस्ता की बात करें या दूसरे जो मगरिबी ममालिक हैं उनकी बात करें, IDPS सोसाइटीज़ एवरीवेयर। अब श्रीनगर में इसका लॉन्चिंग होना, तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? First of all, if we see, we have around 200 schools enrolled under our society. Among them, it's like 110 in India and more than 90 schools abroad. That means being a part of this society is a welcoming stone for Kashmir especially. Though people of Kashmir are highly energetic, they have a lot of potential, but yes, once we get adapted to international standards, that is going to blossom our career as well as education sector. So you mean to say कि अब जो education यहाँ पे setup होगा, that would be completely competing with other countries, like we have United States, we have United Kingdom, we have other European countries. Indeed, because we are going to adapt now global standards, international standards. So our kids will be able to fulfill that international standard, and with that they'll be able to cope up with any of the student, whether in India or in abroad. तो शीमा जी, आपने सोचा था कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ इंडीड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कूप अप विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ग्लोबल लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को ले जाना, और
सिपा सालार तो आप हैं. Yes, जी, जी. it's going to be a very difficult job, but yes, I have 200 academicians at my back, so who are going to not even help us in our curriculum or management kind of stuff, but they are going to be part of our school also. Directly, indirectly, they are going to help us in building a role model school in Srinagar. So, how are things going as of now? Since this is a challenge, this is a new role. So, कैसे आप चीज़ों को देखते हैं? अभी IDPS सोसाइटी की लॉन्चिंग पूरे कश्मीर में इसकी खबर जो है वो फैल गई है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं कि नहीं जी वी हैव टू जॉइन IDPS. We have received an enormous response from parental end, from the Society of Kashmir, and honestly speaking, we are getting n number of queries for admission. Though we have kept our admissions open till 7th of March, but seeing the bulk of response from the parents, I think we might close it very soon. So you mean to say up to 7th only admission process would be there? As our president, IDPS Srinagar himself conveyed this message to the parents of Kashmir. So we have started the admission procedure from 27th, and we are going to conclude it till 7th of March. But yes, alhamdulillah, we are getting n number of response from parental end. So maybe we might stop it before 7th of March. शीमा जी सवाल ये भी है क्योंकि हमें भी कश्मीर क्राउन के ज़रिए बहुत सारी क्वायरीज आई थी from other districts of Kashmir, like we have South Kashmir, North Kashmir या Central Kashmir. So how अगर कोई aspire कर रहा है parent नहीं let me go to IDPS international स्कूल में ही मुझे बच्चे को ले जाना है जहाँ पे ग्लोबल लेवल का एक कंपटीशन भी है जहाँ पे ग्लोबल लेवल का एक एक्सपोजर भी है. So what is the message for those? Admission to the school is the first turning step of child's life, and choosing a correct school for them should be the fundamental rule for a parent. And for parents, I request, please come to our school, have a visit to our school, and check the parameters that we have recently launched our revolutionized kindergarten one. We are just asking them to come to school, observe it, and then take a decision for their kids. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉर्थ कश्मीर से आना चाहे या साउथ कश्मीर से तो उनके लिए वो भी अपने बच्चे को IDPS में ले आना चाहते हैं तो Honestly speaking, and I swear to Allah, yesterday we got an admission from Anantnag. अच्छा, South Kashmir yes, से. And parents were like, this is the welcoming stone, and we don't want our child to be deprived of this kind of system. Though we will be managing the accommodation kind of thing by themselves, but yes, we want अच्छा, our उन्होंने child. कहा कि हम खुद accommodate कर रहे हैं अपने child. But our child should be enrolled only with IDPS. IDPS सोसाइटी के साथ. शीमा जी जो पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे है क्या आपको लग रहा है कि उनमें एक तब्दीली जो बदलाव खासकर डॉक्टर नारायण ने ऐलान कर दिया तो वो पेरेंट्स क्या अभी सोच रहे हैं व्हाट इज द फीलिंग पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली राइट नाउ वो क्यूरियस टू नो व्हाट आर आवर एक्शन प्लान्स दो दे हैव ऑलरेडी understood the kind of plan IDPS society is having, but yes, action plan, they are going to observe it from 1st of April. तो शीमा जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके बाकी यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग फैकल्टी एंड ऑल या नॉन टीचिंग स्टाफ तो आपको लग रहा है कि उनमें भी एक बूस्ट हुआ है कि नहीं जी हमें भी वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं हमें भी इंटरनेशनल लेवल का जो कॉम्पिटिशन और एक्सपोजर तो डू यू फाइंड द चेंज? Yes, indeed. Their energies have been channelized, and most importantly, though I am having a very good team, but yes, it's a kind of fundamental rule in IDPS society that they are going to send trainers not from India but from abroad to just train and mentor our teachers. You mean to say कि जो आपके रिसोर्स पर्सन्स या बाकी जो लोग सॉफ्ट स्किल्स या लाइफ स्किल्स को लेकर हैं तो your teachers would be trained? Yes, our teachers will be trained for the parameters of society now. तो थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझा दीजिए कि ये जो IDPS सोसाइटी की जानिब से कदम उठाया गया है तो क्या आप वाकई सोचती हैं सिंस यू बीइंग एकेडमिशियन तो आपको लग रहा है कि एक तब्दीली आएगी और पूरे मुआशरे के लिए ये एक फ़ायदेमंद कदम है? Indeed. Now there are n number of chances that our students can be clubbed to international kind of forms. So first our students were relevant to certain universities and they needed their education from different platforms, for example from Bangalore and other things. Now everything is in Kashmir. They don't need to travel for education to any other part of the India or abroad.
Now the international standards are with them. Yes, they have to work hard for that. तो क्रेडिट किसको जा रहा है इसका, चूँकि वी डिज़र्व ऑल द गुड एजुकेशन, बट डॉक्टर नारायण ने कहा, मेरे इंटरव्यू में कहा था कि ये जो क्रेडिट सबसे पहला कश्मीर की एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए तो यकीनी तौर पर IDPS सोसाइटी को जा रहा है. Yes, the first credit goes to IDPS Society, and then we had a wonderful infrastructure here, and thank you so much for society that they wanted us to be the role model for them. तो किंडरगार्टन के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या बदलाव आपको लग रहा है, अभी भी करना है या आपने किया है या करने की कोशिश आप कर रहे हैं? देखिए, we already had certain parameters in our kindergarten. I'll be very honest with that. But after observing the kind of parameters, 16 parameters that are already mentioned in our revolutionized kindergarten world, they are meant for holistic development of a student. That means we are going to develop them socially, emotionally, physically, and overall development of well-being of the student will be considered in those 16 parameters. तो you mean to say कि ओवरऑल जो ओवरहाल होगा इनका, तो वो you have done that? Yes, it is like 360-degree change in the student's life. तो अभी क्या रिस्पांस आ रहा है आपका, चूँकि अगर हम पेरेंट्स की बात करें जो आउटसाइड पेरेंट्स है या कॉल्स है, तो क्या सजेशंस मिल रही है पेरेंट्स की तरफ से या क्या उनको कहा जा रहा है? First, parents, those who were already enrolled with us, they are extremely excited about this turning phase in their child's life. And the parents who are not enrolled with us, they are just inquisitive to know about what is this society and what is this revolutionized kindergarten world. तो शीमा जी ये भी जानना चाहेंगे कि तालीम को लेकर, चूँकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, दिन ब दिन सरकार की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि तालीम को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि other schools should learn particularly from this IDPS society? I'm not specific about any school, but the way you have uplifted your kindergarten, you have uplifted the infrastructure, तो आपने हर एक मैदान में यहाँ पे कोशिश की है कि हम स्टूडेंट्स का holistic development करें. तो what do you think need of an See, in all the education organizations, we work on the education of kids. But here in IDPS Srinagar, affiliated with the society. Education, you mean books and? Yes, but here we are going to focus on happiness quotient of our kids. We want happy kids. You want कि student को लगना चाहिए कि वो एक play way. Yes, we want our kids to enjoy studies. It should not be stressed like books ka stress, uska stress. No, our students should come to school and they should leave happy kids from here. तो अगर आपसे पूछा जाए, आप चूँकि श्रीनगर की बेटी हैं, कश्मीर की बेटी हैं, बाकी जो आपको ख़ासकर हमारी ख़वातीन देख रही हैं, यकीनी तौर पर आपको अप्रिसिएशन मिली इससे पहले भी हमारे एक इंटरव्यू में, तो जो हमारी ख़वातीन या टीचिंग इस प्रोफेशन के साथ ये हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? आपने इतनी यंग एज में एक माइलस्टोन अचीव की है. I'll share the thought of my mentor. That is like one should be aware what is the work and how to do the work. And when these two things are clear to a person, you are going to touch skies, inshallah. तो जो खासकर बेटियां हैं हमारी, who aspire to do something better in their life, हमारा मुआशरा दिन ब दिन खासकर women empowerment के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है. तो let's take your example, being empowered women. तो उनके लिए क्या पैगाम है? Be confident about yourself, be confident about your knowledge, be confident about your skill, and try to be sincere with whatever kind of work you are doing, and try to give best every day and evolve yourself every day. आपका क्या गोल है IDPS को लेके? कोई मिशन, कोई विजन? What do you want to see in your career, particularly you are heading this institution? So I want everybody to be happy, and I want this organization to be role model in education sector, not for the society only, to be role model for the education sector also. Thank you so much for talking to Thank you Kashmir so Crown, much, Miss Shima. तो आज हमारे प्रोग्राम में हमने मदऊ किया था IDPS सोसाइटी की प्रिंसिपल मिस शीमा, जो IDPS में गुज़श्ता कई सालों से लगातार काम कर रही है. लेकिन जब से IDPS सोसाइटी दिल्ली ने ऐलान कर दिया कि ये स्कूल अब IDPS दिल्ली का होगा, ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर और साथ ही साथ जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और किंडरगार्टन है वो यहाँ पे
बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों के लिए अवेलेबल होगा। तो आप भी कोशिश करेंगे कम से कम इस स्कूल को बढ़ावा देने के लिए, इस स्कूल को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आप अपनी तरफ से भी अपने हिस्से का हक अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन कश्मीर ग्राउंड। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।